Guys, welcome back to my channel, and I am Shrutika, and today's vlog is a really different vlog altogether. Like, I have not done it in my entire life, and I'll be doing it for the very first time. You might have already judged it from the title itself. It's I am going to chiropractor, and I am taking my mom and dad along with me. My mom is also going there because she also is suffering from back pain from a really long time. Like, it has been 4 5 years now, and even I am suffering from back pain because I had fallen down once and I had lifted a bucket, due to which like it has been there ever since. Like, it comes and goes on and off, depends on how much I work and how long do I sit altogether. So all of those factors are considered. But yeah, so today we are going to chiropractor, and I'm really excited for it because I've seen so many YouTube videos and so many of them doing this, and it's really fascinating to see. I'm not at all scared, neither is my mom. Like, we are very excited for it because I believe that a couple of sittings might help. So we are going for a first sitting. This is our first sitting, and let's see how it proceeds. How frequently are we going to get this procedure done? How many sittings do we require? And all of those stuff. So yeah, without any further ado, let's just see how it is. This is the area, guys. It's Greater Noida Alpha, and we have to go in Tyson's building, which is right here. We have to go on the second floor. पेट को संभाल के चलना पड़ रहा है, तो मेरा स्टाइल बदल गया है। देखो आपकी ये काफी वीक है, आपको यहाँ पे कोर मसल्स होती हैं पेट की, वो वीक है। चलिए चलिए थोड़ा चलिए थोड़ा चलिए। अभी तो फिर भी ठीक चल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसे चलना पड़ता है, जब ज़्यादा पेन रहता है। अभी भी पेन नहीं हुआ। हाँ हाँ नहीं टेंशन ना लीजिए, दर्द ठीक करवाने आए आप। हाँ लंबी गहरी सांस लीजिए, ढीला छोड़ो। जितना दिमाग को और बॉडी को ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आपको दर्द होगा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, बेड को पकड़िए अपने हाथों से और सीधा बैठ जाइए। बैठो। हाँ, ऐसे थोड़ी उठना होगा। ऐसे ही उठना है। मैं आपकी पेल्विस रोटेशन देख रहा हूँ। इट्स नॉट अ गुड वे टू सिट, बट अपने हाथों का सहारा ले लीजिए और बैठ जाइए। पूरा बैठिए बैठिए। इफ यू नीड हेल्प वी कैन हेल्प यू। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। पहले इंसान दिमाग में सोच लेता है मैं ये नहीं करूँ। वापस जाइए, दोबारा आइए, दोबारा बैठिए। प्रेशर लगा रहा हूँ, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आपको फीवर वगैरह बाकी से इन्फेक्शन के साइन सिम्टम भी होते हैं और बहुत सीवियर पेन होता है उसमें, ठीक है। तो आइटिस इज अ रॉन्ग टर्म टू बी यूज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, ये जनरल मिथ और मिसकंसेप्शन टर्म्स होते हैं जो इंडिया में बहुत यूज होते हैं।
तो ये बताया गया मुझे नंबर वो नीचे 3 और 4 में क्या है कुछ नहीं होता। गैप मेरे में भी है, मैं इनका एमआरआई करा दूँ, इनके में भी गैप आ जाएगा, इनका एमआरआई कराऊँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, आपकी पेल्विस राइट साइड के, आपके सारे टेस्ट पॉजिटिव राइट साइड को आ गए। जब आप आगे झुके ऐसे बैठ के, सारे टेस्ट आपके राइट साइड के पॉजिटिव है। जो पेल्विस है उसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू हैं और मसल्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, और जैसे ही आप खड़े होते हो आपकी बैक ऑलरेडी ऐसे आर्च है, ठीक है, वो नर्व्स पे और कंप्रेशन पड़ता है, इसलिए झंझनाहट स्टार्ट हो जाता है, उल्टा रहती है। धीरे छोड़िए, लंबी गहरी सांस, धीरे छोड़िए, हो गया बस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लंबी गहरी सांस लीजिए। आपको करना क्या है, ये जो कमर है, ठीक है, जो हड्डी है, आपको अपनी कमर को ऊपर लेके जाइए और यहाँ पे रोक के रखिए, रोक के रखिए, अंदर पेट को अंदर खींचिए, सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए, हिप्स को स्क्वीज कीजिए, पेल्विक फ्लोर की मसल जो होती हैं उनको स्क्वीज कीजिए, 10 काउंट तक रोक के रखना है और फिर ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़िए। सुबह दोपहर शाम 10-10 बारी ये कीजिए, हर एक रेपिटेशन 10 बारी के लिए 10 काउंट तक रोक के रखें। मुझे जरूरत होगी बात करके देखो। वेरी गुड, turn your pelvis up, upward, squeeze your hip muscles, squeeze your pelvic floor muscles, squeeze, suck it in। सांस नहीं रोकनी है, सांस नहीं रोकनी है, सांस नहीं रोकनी है। वेरी गुड, दोनों पैरों पे बराबर वजन, गुड गुड, कोई दिक्कत ना। रिलीजियसली करना है ये, सुबह दोपहर शाम 10-10 बार। जितना कम करेंगे, सिटिंग ऑन योर हील्स, जैसे नमाज पोजीशन में बैठे हैं वैसे बैठे, नमाज पोजीशन। आगे झुकिए, हिप्स नीचे रहेंगे, आराम से आगे झुकिए, आराम से आगे झुकिए। You feel the stretch in your entire back muscles, ठीक है, हिप्स पे भी स्ट्रेच फील होगा। सांस लेते रहेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको 20 से 30 सेकंड रोकना है और सुबह शाम 5-5 बारी करना है। ठीक है, एक रेपिटेशन 20 से 30 सेकंड रुकेगा, आप 5 बारी करोगे, ठीक है, और फिर शाम को भी 5 बारी करोगे। ठीक है जी, फिर आप ऊपर आ जाइए। So guys, we are back and I could not shoot my procedure like the one which was happening on me because my phone got switched off. I was shooting from my phone and I could only shoot my mom's part. So for my mom, the procedure and the treatment, the consultation part was a little different because her suffering was different and my suffering was different. So for me, he had used like this neck thing, so I also got that done, and along with the back. And because a few months ago, like this year itself, when I had traveled to US, I suffered from a really bad neck injury. Like it was not an injury, but it was a muscle spasm basically, which has been here in the right hand side of my neck. So that was the one which I also told the doctor. And then there was a gun vibrator kind of a thing which he put all around my back portion, starting from my neck till bottom, like bottom of the leg till my feet. So that gun was really therapeutic. It was so relaxing, like I almost slept. It is a really great experience. I think any of you who are facing back pain issues or any kind of neck or back issues, you must go to chiropractor, and it's very relaxing as well. So if you just want to go and consult for one sitting, you can do it. It costed me around 800. So only for consultation part it's 500 and 300 for one sitting, which includes consultation, and so overall it's 800 basically. I would link it down in the description box below. Where did I go? I went to Greater Noida, as mentioned, as you have already seen in the vlog. So yeah, so for now, let me know how was the video and how did you like this. I really tried something different. Comment down below if you have ever been to a chiropractor and how was your experience about it.
Mine was really good. So thank you so much everyone. Please like, share and subscribe. Don't forget to follow me on Instagram. My Instagram handle is right on my channel. Till then, bye.